वहीं दूसरी ओर एक जज्बे की कहानी आपको बताते हैं, जहां एक 3 साल की बच्ची एसिड अटैक का शिकार होती है, लेकिन जो दर्द, जो पीड़ा वो सहती है, उससे उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बजाय उसको अपनी ताकत बनाने का फ़ैसला किया और बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन किया। और इन एग्ज़ाम्स में 10th के रिज़ल्ट में उसने अपने पूरे स्कूल में जो है वो टॉप किया। बच्ची देख नहीं सकती, चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पार निकलकर उसने अपनी शिक्षा, उसने अपने भविष्य को जो है वो आगे रखा और उस भविष्य की ओर और अपने एम की ओर वो लगातार आगे बढ़ती रही। हमारे संवाददाता द्वारा ख़ास जो है वो बातचीत इस बच्ची के साथ की गई। इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 5.6% CBSE ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਵੀ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? Definitely, sir, all have their struggles, and I mean, throughout this journey, my parents, teachers, and other well-wishers all have been supported me. And if I talk about this examination, so I mean, I worked hard, prepared, and my teacher, parents helped me a lot throughout this journey. And thankfully, I'm very grateful to them and to God who've given this opportunity. And if I talk about my future, my short-term goal is to get into Delhi University, and after that my ultimate goal is to become an IAS officer and serve to my society in my best way. क्या बात है। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? So we have both things like textbooks and audiobooks, which are provided by our school, and by audiobooks we covered NCERT, and if I talk about PYQs and sample papers and other material, so in this technology helped us a lot, and from YouTube I took help and to solve PYQs, sample papers, so it also helped a lot. And also I would like to give credit to my teachers, like whenever I had any doubts, so they always there for resolving that. वहीं दूसरी ओर एक जज्बे की कहानी आपको बताते हैं, जहां एक 3 साल की बच्ची एसिड अटैक का शिकार होती है, लेकिन जो दर्द, जो पीड़ा वो सहती है, उससे उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बजाय उसको अपनी ताकत बनाने का फ़ैसला किया और बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन किया। और इन एग्ज़ाम्स में 10th के रिज़ल्ट में उसने अपने पूरे स्कूल में जो है वो टॉप किया। बच्ची देख नहीं सकती, चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पार निकलकर उसने अपनी शिक्षा, उसने अपने भविष्य को जो है वो आगे रखा और उस भविष्य की ओर और अपने एम की ओर वो लगातार आगे बढ़ती रही। हमारे संवाददाता द्वारा ख़ास जो है वो बातचीत इस बच्ची के साथ की गई। इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 5.6% CBSE ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਵੀ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? Definitely, sir, all have their struggles, and I mean, throughout this journey, my parents, teachers, and other well-wishers all have been supported me. And if I talk about this examination, so I mean, I worked hard, prepared, and my teacher, parents helped me a lot throughout this journey. And thankfully, I'm very grateful to them and to God who've given this opportunity. And if I talk about my future, my short-term goal is to get into Delhi University, and after that my ultimate goal is to become an IAS officer and serve to my society in my best way. क्या बात है। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ?
So we have both things like textbooks and audiobooks, so, which are provided by our school. And by audiobooks, we covered NCRT. And if I talk about PYQs and sample papers and other material, so in this technology helped us a lot. And from YouTube, I took help and to solve PYQs, sample papers. So it also helped a lot. And also I would like to give credit to my teachers. Like whenever I had any doubts, so they always there for resolving that.